This is lesson number 5 of functions. The third transformation is stretches. First, vertical stretch. Vertical stretch. If stretch is taking place along y-axis, then x coordinates remains invariant. If stretch is taking place if stretch is taking place along y-axis, then x coordinates remains invariant. This is the example of this. Let fx is equal to x square minus 2x minus 3, then 2fx will be 2 multiplied by the function x square minus 2x minus 3. This shows that stretch along y-axis. This shows that stretch along y-axis with stretch factor 2 with stretch factor 2. This means that we multiply the y values by 2. Multiply y values by 2. Let's see the graph of this. The vertex of this function is x square minus 2x minus 3 vertex. This is a quadratic curve. The vertex is 1 minus 4. So this is 1 and this is minus 4. The curve will pass through 3 and minus 1. This is 3 and this is minus 1. तो हम कर्व स्केच करेंगे. Curve will pass through -3
दिस इज -3। तो ये हमारा कर्व जो है यूं बन जाएगा। ये कर्व होगा हमारा दिस इज अ कर्व, दिस इज f(x). ये फंक्शन का स्केच है और ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन जो है वो 2f(x), उसका ग्राफ ये डिफरेंट कलर से होगा। ये हम y वैल्यूज़ को देखें, y वैल्यूज़ जो है वो -4 है, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट जो -4 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम -8। दिस इज -8 एंड ग्राफ जो है -6 वर्टिकली, वाई एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस को -6 पे इंटरसेक्ट करेगा, तो x रिमेन द सेम। देखें ये x हमारे पास यहाँ पे 3 है फंक्शन का, और ट्रांसफॉर्म फंक्शन का x जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ग्राफ जो है ट्रांसफॉर्म ग्राफ का जो वर्टेक्स है वो 1 -8 हो जाएगा, क्योंकि हमने y वैल्यूज़ को -2 से मल्टीप्लाई किया है, y वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो वर्टेक्स 1 -8 बन जाएगा। तो अब हम ये ग्राफ -6 में से पास करेगा, दिस इज -6। तो अब हम ग्राफ स्केच करते हैं। तो ग्राफ इसका यूं बन जाएगा। दिस येलो ग्राफ जो है दिस इज ऑफ 2f(x). ये 2f(x) का ग्राफ हमारे पास आ गया है। तो ये देखें y वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा वर्टेक्स जो है ट्रांसफॉर्म फंक्शन का वो 1 -8 है। नेक्स्ट इज हॉरिजेंटल स्ट्रेच। ये वर्टिकल स्ट्रेच था, नेक्स्ट इज हॉरिजेंटल स्ट्रेच। Horizontal stretch, if stretch is taking place along x-axis, the y coordinates remains invariant. If stretch is taking place along x-axis, then y coordinates remains invariant. Invariant mean does not change. Let's see an example.
Suppose we have a function fx. Function is same as in vertical stretch. Fx is x square minus 2x minus 3. This is a quadratic curve. So we have to find f 2x. F 2x this become 2x whole square minus 2 into 2x minus 3. This shows that stretch along x-axis, ये x वैल्यूज को x वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है. This shows that stretch along x-axis with stretch factor 1/2. अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो stretch factor 1/2 होगा. This shows that stretch along x-axis with stretch factor 1/2. इसका ग्राफ देखते हैं हम. यहाँ पे नोट कर लें कि हमने डिवाइड करना है एक्स वैल्यूज़ को बाय 2. डिवाइड इन दिस केस डिवाइड x values by 2. इसके स्ट्रेच फैक्टर 1/2 हो तो डिवाइड करेंगे x वैल्यूज़ को बाय 2. तो इसका ग्राफ देखें. This is the graph of this. The vertex of this is 1 minus 4. This is 1 and this is minus 4. Or graph will pass through x-axis from 3 and minus 1. Along y-axis it intersect at minus 3. यह फाइंड कर सकते हैं. y की x वैल्यूज को x को 0 पुट करेंगे ओरिजिनल फंक्शन में तो आपके पास -3 आएगा. तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा. This is the parabolic curve. Graph passes through x-axis at -1 and 3. And now since the stretch is taking place along x-axis तो हम x वैल्यूज़ को y रिमेन्स इनवेरिएंट, ये देखें -4 ही रहेगा. ट्रांसफॉर्म्ड कर्व का y जो है
वर्टेक्स जो है वो -4 ही 1 -4 ही रहेगा, लेकिन एक्स वैल्यूज़ को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये देखिए एक्स एक्सिस पे 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ट्रांसफॉर्म जो है वो 3/2 में से पास करेगा। तो 3/2 इज़ 1.5, दैट इज़ दिस पॉइंट, और लेफ्ट पे -0.5 विच इज़ दिस, और ये वाई वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। तो हम ग्राफ इसका स्केच करते हैं। वाई रिमेन्स इनवेरिएंट, तो ये ग्राफ बन जाएगा यूं। ये येलो कलर का ग्राफ जो है ये हमारा, ये थोड़ा इसको मैं ऐसे शो करता हूँ। तो ये देखिए ये वाई दोनों का सेम है, दैट इज़ -4, और एक्स वैल्यूज़ जो हैं वो हाफ हो गई हैं। देन नेक्स्ट ऑफ इज इट इज़ कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस या मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर एफ एक्स पे 2 और मोर देन 2 ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई हो रही हैं तो फिर उनको अपने कैसे करना है, कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस। Combined transformations when combining transformations, care must be taken with the order in which transformations are applied। तो आपने उसके ऑर्डर को ज़रूर कंसीडर करना है। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आपको बताता हूँ। ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिस्क्राइब करना पड़ता है कि अगर मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई हो रही हैं तो फिर उनको कैसे डिस्क्राइब करना है, किस ऑर्डर में। दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। यहाँ पे देखें आपके इस फंक्शन में देयर आर 3 ट्रांसफॉर्मेशंस: ट्रांसलेशन, स्ट्रेच, रिफ्लेक्शन। टी एस आर, टी ट्रांसलेशन, एस स्ट्रेच एंड आर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैं उनको ऑर्डर लिखता हूँ। नंबर 1, ट्रांसलेशन। This is the order of transformations. Translation, horizontal। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रांसलेशन हॉरिजेंटल को डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 2, स्ट्रेच। सेकंड नंबर पे स्ट्रेच होगा।
Number 3, reflection. And number 4, translation vertical. Translation vertical. This is the order of transformations. तो सिंपली आप उसको यूं कह सकते हैं, दिस इज अ शॉर्टकट, ये याद रखने के लिए है, TSR, T for translation, TSR, फिर T, this T is, first T is horizontal translation, then stretch, then reflection, at the last vertical transformation will be applied. H horizontal, V vertical. First, second, third, fourth. This is a shortcut to remember this order of transformations. Next, now I will give you the example, two examples. Example 1, the graph of example 1, the graph of, if the graph of, if the graph of y is equal to fx is transformed to y is equal to 2fx plus 3. This shows that, ये देखें जो fx के साथ 2 है वो स्ट्रेच है, प्लस 3 है दैट इज ट्रांसलेशन. तो इसको ऑर्डर में कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? फर्स्ट इज स्ट्रेच, ऊपर ऑर्डर देखें, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन नहीं है, स्ट्रेच है, स्ट्रेच वर्टिकली है, तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे स्ट्रेच fx vertically up with stretch factor 2 and then
उसके बाद ये +3 क्या है, ट्रांसलेट है, ट्रांसलेशन है 3 यूनिट अप अलोंग वाई एक्सिस एंड देन translate 3 unit up along y-axis तो ये डिस्क्राइब हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, example 2 is the graph of y is equal to fx is transformed to the graph y is equal to f 2x plus 3। यहाँ फिर दो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही हैं fx पे। +3 जो है दिस इज ट्रांसलेशन of fx, 3 unit left, and 2x means that 2 is this is stretch horizontally with stretch factor 2। तो हम ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, पहले ऊपर आप ऑर्डर देखें, TSRT हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन है, पहले उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। ट्रांसलेट fx 3 यूनिट देखिए यहाँ पे ऑर्डर में देखें हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन, इसमें +3 जो है वो हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन है, 3 यूनिट लेफ्ट। ट्रांसलेट fx 3 यूनिट्स लेफ्ट and then stretch horizontally क्योंकि x वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो दिस इज हॉरिजेंटल स्ट्रेच एंड देन स्ट्रेच हॉरिजेंटली with stretch factor 1/2। देखें इसका स्ट्रेच फैक्टर जो है 1/2 होगा। अगर x वैल्यू को x के साथ 2 है तो स्ट्रेच फैक्टर 2 होगा।